on stage. Mr. Venkatesh Nayak from CHRI? Not here. Okay. And Avinash from HIL, our data partner. Please do come up on stage, sir. Yeah. And Vale, our project lead. I'll hand it over to Vale now. Thank you. थैंक यू एवरीवन, सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की एक वीडियो मैसेज जस्टिस मदन लोकुर ने हमारे लिए रिकॉर्ड किया है, उससे शुरू करेंगे। उस बीच हमारे एक दो साथी रह गए हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद माया जी अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगी, उसको मैं ख़त्म करूँगा। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उनको हमारा पैनल, जो जिन लोगों ने रिपोर्ट को शुरुआत से मोल्ड करा है, शेप करा है, वो उसको आपके क्वेश्चंस लेंगे। IJR is in its third edition over a period of 5 years. That's excluding 2 years when COVID was prevalent. The IGR is based on empirical data collected over the years. And I think it's an extremely important survey of our justice delivery system. And there is a lot to learn from it. There are 4 pillars that are dealt with in the IJR: the judiciary, the police, prisons, and legal aid. Now, as far as the judiciary is concerned, we get an idea of the kind of in different states. Performance. Some that were doing well have done well. The information that is provided by the IJR is taken seriously. The judiciaries can improve and dispense expeditious justice to the people of the state and therefore to the people of the country. So far as the police is concerned, again, the information is based on empirical data collected over a period of time. And one of the areas where I think it is important to look at, so far as the police is concerned, is diversity. There does appear to be a shortage of women officers. As far as prisons are concerned, well, I think the information is not all that great, but there is a solution, and that solution I think has been shown to some extent by the state of Rajasthan, which has advocated the idea of open prisons. There are open prisons in several other parts of the country as well, but Rajasthan has taken it to the next level. I have actually visited the open prison, one of the biggest in Rajasthan, in Sanganer near Jaipur. And I think it is a model that should be replicated in all parts of the country. That will solve to a very large extent the problems that we have in jails and will, I think, in the long term, bring about considerable reformation in the jail and prison system. As far as legal aid is concerned, it's doing well, there's no doubt about it, but there is a lot that needs to be done. For example, the number of people who are actually utilizing legal aid, free legal aid and services, the number may have increased, but the percentage is not particularly high. And one of the reasons for that, which apparently is disclosed by the data, is the lack of confidence in the kind of lawyers that are engaged to serve the interests of people who belong to the disadvantaged groups and the marginalized groups.
This is not to say that the quality is poor, but it is to say that we need to step up and scale up the influence that the legal aid authorities can have in giving free legal aid and advice and assistance to people belonging to the disadvantaged and marginalized sections of society. So a lot needs to be done in this regard, and I'm sure NALSA and some of the state legal services authority will do the needful in due course of time. I look forward to the next edition also of the IJR to see whether improvements have actually been made in all these spheres, and also an expansion in the mandate of the IJR. All the best, and I hope the rankings will not. I will keep switching into Hindi and English, but I think most people will follow some form of Hindi. I'll just make it a mix. India Justice Report ranks structural capacity only. It does not comment on the quality of justice being delivered. It looks at whether you have every state has a capacity. हम सिर्फ सरकारी डेटा यूज़ करते हैं, और ये जो रिसर्च अलग अलग जगह पे बिखरी होती है, जुडिशरी, प्रिजन्स, पुलिस, लीगल एड पे, उनको हम एक जगह लाते हैं और हम चेंजेस को भी ट्रैक करते हैं. ये हम लोग 3 बार से हम लोग करते आ रहे हैं, 2019 से शुरू करके, और आज जैसा मैंने बोला 4 पिलर्स हैं. इस बार हम लोगों ने एक नया सब सिस्टम इसको हमने स्टडी करा है. ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, और हमारे हर पिलर के लिए वी हैव सर्टेन थीम्स विच इज़ बजट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, infrastructure, workload, diversity, and to track changes we look at time series data. We have about 102 indicators. Some of them are on the screen, such as training पे क्या खर्चा है, SC, ST, OBC इनका क्या प्रतिशत है हर पिलर में, और कुछ नई चीज़ें जैसे कि CCTV जजमेंट का, कंप्लायंस का क्या स्टेटस. हम राज्यों को 2 बड़े क्लस्टर, जो रैंक राज्य हैं, 25 स्टेट्स हैं, उनको हम 2 बड़े क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, जो 1 करोड़. There is a third cluster of unranked union territories and the states where there is the AFSPA in force. इस बार नया क्या है? हम लोगों की कई मीडिया के दोस्तों से मीटिंग्स हुई, उन्होंने कहा इस बार नया क्या है, आप लोग चेंजेस ट्रैक कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कुछ नया होना चाहिए. तो नया जैसा मैंने कहा SHRC है, 17 नए मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं, और एक नई वेबसाइट जो कि सारे डेटा को साथ में लाती है, वो हम लोग आज उसको रिलीज़ करेंगे. वेबसाइट के बारे में मेरे 2 कॉलीग्स आपको ज़्यादा बताएंगे थोड़ी देर में. IJR सिर्फ एक बड़ी रिपोर्ट नहीं है जो शायद आपने देखी होगी. हम लोग हर स्टेट के लिए उन स्टेट स्पेसिफिक डेटा वी कलेक्ट एंड पुट इट आउट स्टेट फैक्ट शीट्स. You can pick them up, they are outside on the table. So here on the screen you'll see, this is for Uttar Pradesh, where IJR 1 value is given for every indicator, IJR 2 is given, and then IJR 3 is given. The new thing we have added for everybody's benefit is the best value क्या है. जैसे कि अगर शेयर ऑफ ट्रेनिंग बजट इन पुलिस बजट, तो उत्तर प्रदेश का 1% है, और जो बेस्ट वैल्यू है वो है 2.66 तेलंगाना की, और 0 केरला की. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो ये इससे आपको सहूलियत होगी. मेन अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं. मेन मुद्दा क्या है? व्हाट आर द टॉप, वन ऑफ द टॉप हेडलाइंस, which is that justice capacity has fallen across 11 states. और अगर हम बॉटम के 3 राज्यों को ही लें, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, where 45 crore people live, that size alone is equivalent to the 27 countries of European Union. So this is a way to understand why we do this. This is very important. हम लोग हमेशा क्वालिटी की बात करते हैं, बट कैपेसिटी की तरफ भी देखने की बहुत ज़रूरत है. ये है रैंकिंग इस साल की 2022, and this time Karnataka has come on top overall across police, prisons, judiciary and legal aid.
Karnataka has done better than all other 18 states in the large states cluster. And similarly, you can see the ranks of all the states are given. Largely, we notice that the southern states are doing quite well, better than the other states. Uttar Pradesh has remained, despite making improvements in its human resources and other areas, because need is so much in Uttar Pradesh, it is still at 18. The idea of the ranking is to simply foster some kind of competitiveness through data. It doesn't mean that everything in Uttar Pradesh or everything in West Bengal or everything in Rajasthan is bad. It is just a tool to talk about these capacity issues. Similarly, for the small states, the ranking looks like this. Sikkim, very small state, हर चीज़ में workload वगैरह चीज़ें कम होती हैं, small states में scale कम हो जाती है. फिर भी justice delivery is equally important whether you are a big state or a small state. The needs of the people are the same, and therefore this is equally important. Goa has fallen after being in the first place in the first report, then the third place, and now the 7th. So there is something to be concerned about so far as Goa is concerned. This is the pillar-wise ranking. I will not go into it, पर हम लोग आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कि हर राज्य के लिए पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, लीगल एड में कैसा परफॉर्मेंस रहा, और इनके परफॉर्मेंसेस को हम लोग एवरेज करके एग्रीगेट करके हम ओवरऑल रैंकिंग बनाते हैं. Similarly for small states, रैंकिंग और ये 25 स्टेट्स के लिए है, बट डेटा हर 36 स्टेट्स और यूटीज के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं और पुट आउट करते हैं. किसी भी चीज को स्टडी करना है, बात आ जाती है कितने वित्तीय संसाधन हैं. व्हाट इज द फिस्कल एलोकेशन, विदाउट विच a lot cannot be done, and therefore we have looked at the budgets, and it's on the screen. You can see that the highest allocation, and perhaps understandably, is towards police, which has for 2021 the states spent 1.56 lakh crores, and then you can see the least is for legal aid. And as Justice Lokur mentioned in his message, legal aid is a very critical pillar of the justice system, and it still remains massively, severely underfunded, having less than 4 rupees per capita expenditure, per capita spend on legal aid, and in police it is about 1100 rupees. Also, आप लोग का मैं ध्यान चाहूँगा इसके ट्रेनिंग के बजट पे. पुलिस का अनुभव खासकर पत्रकारों को ज़्यादा होता है, और हम लोग भी बात करते हैं ट्रेनिंग इनकी कम है. हमारे साथ विपुल बैठे हैं, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ट्रेनिंग की सर्वे करके बताया था कि ज़्यादातर पुलिस वाले इंडक्शन के बाद कभी ट्रेनिंग पाते ही नहीं हैं, और ट्रेनिंग का बजट 2% से भी कम है. हर राज्य में आप जाएंगे, वो अपने 100 रुपये में से 2 रुपये भी नहीं डालते हैं अपने पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, जो कि काफ़ी शॉकिंग है. तो ये जो 1100 रुपये जो पुलिस की पर कैपिटा स्पेंड है, आखिर इसको हम कैसे समझें, क्या ये कितनी ज़्यादा है कितनी कम है? बिकॉज देर आर नो स्टैंडर्ड्स टू फॉलो और एनी गाइडलाइंस दैट वी कैन शो यू, वी हैव जस्ट ट्राई टू मेमिफाई इट इन अ वे कि 1100 रुपये में एक सिंपल फ़ोन आता है, 6 बर्गर आ सकते हैं, और ये हमारी पर कैपिटा स्पेंड ऑन पुलिस है. और अगर बाकी चीज़ों में तो मैं जाऊंगा भी नहीं कि वो, क्योंकि वो और भी कम है. जुडिशरी में वी आर स्पेंडिंग 146 रुपीज़ पर कैपिटा. प्रिजन्स की बात करें तो हमारे पास रिपोर्ट में आंकड़े हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में या हर राज्य में प्रतिदिन कितना खर्चा होता है एक कैदी पर. उत्तराखंड आप देखें, हमने जो लगाया स्क्रीन पे, उत्तराखंड डेली स्पेंड ऑन इनमेट्स वो 10 गुना कम थी केरला से, हालांकि दोनों की इनमेट पॉपुलेशन 6-7 हज़ार ही है. और ऐसा क्यों? और ये हर स्टेट के बारे में आप देख सकते हैं. इसी तरह से नालसा का फंड जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, अगर सिर्फ उनका ही बजट ले लें तो हम 1 रुपये पर कैपिटा स्पेंड कर रहे हैं लीगल एड पे. इसके बावजूद कि 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एलिजिबल फॉर लीगल एड. और हमने ये नालसा फंड का यूटिलाइजेशन, स्टेट का अपना फंड का यूटिलाइजेशन के फिगर्स दिए हैं. एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि ज़्यादातर राज्य अब 70% से ज़्यादा पैसा उनके टोटल लीगल एड बजट के लिए दे रहे हैं. दैट इज़ अ पॉजिटिव.
that states are very aware to the legal aid needs of the population, and they are putting more money there. We'll talk about vacancies a lot because it is a crucial aspect of justice system capacity, and I will not go into each pillar's figures, but I will just say that these are national vacancies. At the state level and in disaggregated ranks, they easily go beyond this. And especially note the vacancy at high courts, the vacancy in officer and police, which you will see in the next slides. अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि पेंडिंग केसेस के बारे में बहुत बातें होती हैं और हमेशा पब्लिक उसके बारे में सुनती भी रहती है, लेकिन आप देखिए पेंडिंग वैकेंसी कितनी ज़्यादा। राजस्थान में हाई कोर्ट में नियरली 50% वैकेंसी है एज ऑफ द फिगर्स वी हैव। इन हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तक 40% तक वैकेंसी टच हो रही है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग जुडिशरी की एफिशिएंसी में ना भी जाएं, पर 40% वैकेंसी इज अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वैकेंसी, एंड इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स यू विल सी this is not just isolated examples. A lot of states have high vacancy in the range of 20 to 35% and so on. Small states are similarly placed. Prisons में vacancy के हालात बहुत बुरे हैं और उसका नतीजा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगेन उत्तराखंड का एग्जाम्पल, एक मेडिकल ऑफिसर है सिर्फ पूरे राज्य के 6,000-7,000 इनमेट्स के लिए, और इस तरह की ये स्टोरी आपको हर जगह मिलेगी। हम लोग जानते हैं कि प्रिजन्स के बारे में उतनी कंसर्न नहीं होती है लोगों के बीच में, लेकिन प्रिजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज डायरेक्टली अंडर द जुडिशरीज गार्डियनशिप, and we need to increase especially the kind of medical attention, the kind of counseling, correctional facilities that inmates are being given. And Dr. Vijay Raghavan is here, who can speak more about this issue in the question and answer session. I'll just say on this slide कि जो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं उनका शेयर बढ़ा है 23 राज्यों में। ये हो सकता है कोविड की वजह से हुआ है, लेकिन पहले भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे। आप देख लीजिए जितने भी रेड दिख रहे हैं वहाँ सब जगह बढ़ा है, गुजरात को छोड़ के जहाँ पे ये शेयर कम आया। 5 साल से ज़्यादा केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, और इस तरह के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वी हैव डॉक्टर ऑर्गो सेन गुप्ता फ्रॉम विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी who can explain to you how this is affecting everything, including our economic development and so on. ये देखें आप 2017 से केसेस पेंडिंग पर जज लगातार बढ़ते आ रहे हैं। 2021 में ये 7,500 तक टच किया, अब इन्होंने थोड़ा नॉर्मलाइज होकर कम होना शुरू करा है, पर फिर भी आप सोचें एक एक जज के ऊपर हाई कोर्ट के 6,000 केसेस का वर्कलोड है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हैं, पर फिर भी दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू डील विद वर्कलोड। दिस अदर थिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज being provided, this very important data has been provided by our partner DAKSH, and Leah is here from DAKSH who can talk about it, कि हर हाई कोर्ट में एक एवरेज केस कितने साल तक पेंडिंग रहेगा। तो त्रिपुरा जो कि एक छोटा ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पे 1 साल, इलाहाबाद जो कि काफ़ी बड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा साल लगेंगे 11, और इस तरह से हर हाई कोर्ट के लिए ये डेटा अवेलेबल है हमारी रिपोर्ट में। इस पे आते हैं हम, विमेन इन जस्टिस सिस्टम। आधी आबादी अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन टू से इट इज नॉट प्रेजेंट इवन 30% in the justice system. It is only in the subordinate courts at the national level that we see that there are 35% women judges. How the best way to read this graphic would be to look for बड़े वाले गोले। तो जहाँ गोले ज़्यादा बड़े हैं उसका मतलब वहाँ शेयर ज़्यादा है। तो आप देखिए, मैं अगर आपको प्रिजन्स, एक ये अपवाद है, इट इज एन एक्सेप्शन दैट इन कर्नाटका देयर आर 32%
women staff in the prisons, but mostly everywhere else you'll see it's in single digits. You come to the police thing and you see women and police officers, the national average is 8%. In Andhra Pradesh, there are only 5.4% women officers. In West Bengal, 4. In Kerala, 2.4. This is a level of inclusion in the higher ranks in the police. And this story repeats itself across the pillars, except, as I said, in the lower judiciary where the numbers are rising quite fast. And therefore, जो कहा जाता है कि ग्लास सीलिंग है, महिलाएं आपको मिलेंगी तो ज़्यादा लोअर रैंक्स में मिलेंगी. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस बारे में सेंसिटाइज हैं, पर बहुत हैं जो इस चीज़ को उस तरह नहीं देखते. तो अगर आप मान लीजिए आम नागरिक हैं, तो आपको पुलिस में क्या चांसेस हैं एक महिला ऑफिसर से टकराने का? 9 में से 1. हाई कोर्ट में 7 में से 1. सबऑर्डिनेट कोर्ट में इंप्रूव हो गया 3 में से 1, और इस तरह से. ये चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है. एमएचए ने 2013 से लेकर अभी तक कई बार एडवाइजरीज इशू करी हैं कि हर थाने में 10 विमेन कांस्टेबल्स होने चाहिए और 3 एसआईज. ये ग्राफिक आपको दिखा रहा है कि सिवाय बिहार के और महाराष्ट्र के और कुछ हद तक पंजाब के, कोई भी राज्य के थानों में ऑन एवरेज 10 महिलाएं नहीं हैं. लेफ्ट साइड पे जो आपको, आपके राइट साइड पे जो आपको सब एसआई का फिगर दिख रहा है, वहां तो कोई भी नहीं है. कोई किसी भी ऑन एवरेज थाने में 3 विमेन एसआईज नहीं है. तो आधी आबादी की जरूरतें अगर इस तरह का इंक्लूजन रहा, पूरी नहीं हो सकती अच्छे ढंग से. फिर यही स्मॉल स्टेट्स के लिए, यहां पर आप देखिए दिल्ली जो कि सीधे गवर्न होता है, राजधानी है, यहां पे दोनों लीड कर रहे हैं. तो अगर दिल्ली में हो सकता है तो बाकी जगह भी हो सकता है. ये ग्राफिक अगर कुछ दोस्त पहले से फॉलो करते आ रहे हैं देखेंगे, इससे हंसी आती है रोते रोते. आई वाटरिंग laughter, as Maya put it, for something. That this basically is telling you how many years it will take for each state to reach 33% share of women in police. And the red line shows you that this number of years has increased. So in Jharkhand 200 साल लगेंगे 33% महिला का प्रतिशत होने में, और त्रिपुरा में तो आधी, हाफ अ मिलेनियम लग जाएगा, 500 years से ज़्यादा, और इसी तरह राजस्थान और so on. But the good thing again, you'll see the green smaller lines. There is improvement. So there is improvement. Last we recorded in the last report there were about 10% women in overall police. This has increased slightly to 12% women in overall police. But as I said, women in officers is still very low. इस कैटेगरी के बारे में मैं बस एक ही शॉर्ट पॉइंट बोलूँगा. आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीपीआरडी के डेटा में ये अदर्स कैटेगरी में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. ये सारी कैटेगरीज एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, ये सब हटा के एक अदर्स है. जैसे कि हम लोग जो बजट नहीं एक्सप्लेन कर पाते उसको मिसलेनियस या अदर्स में डाल देते हैं. ये उस तरह की कैटेगरी है, और इनका शेयर पुलिस में 1.2% था 2019 में, आज 5% है. तो करीबन 20 लाख की पुलिस फोर्स में ऑलरेडी ये 1 लाख से ज़्यादा अदर्स हैं. कई जगह पुलिस मैत्री और ये इस तरह के मॉडल चल रहे हैं. आंध्रा में 15,000 महिला पुलिस को विदाउट पुलिस ट्रेनिंग रिक्रूट करा है. उससे आंध्र प्रदेश का विमेन इन पुलिस एकदम से बढ़ गया. इस पे ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं, और हम इसमें बारे में बाद में बात भी कर सकते हैं. SC, ST, OBC and vacancies in police. I think you know the story here. I would just point out that the way to read this graphic would be to look for the dark shade of red, and हम सब जानते हैं there is hierarchy within the quotas there between SC, ST and OBC, and that is reflected in their inclusion numbers within the police as well. Even in states where there is a large population of SCs and STs, the quotas are not filled. And this is not a new reservation like in some states. कुछ समुदायों को अभी हाल ही में आरक्षण मिला होगा 5-10 साल पहले. ये सारे आरक्षण दशकों से हैं, फिर भी हम इनको क्यों नहीं भर पा रहे हैं, और हम कह भी नहीं सकते कि लोग उतने मेरिट वाले नहीं आते. इस बारे में भी
कई सारा डेटा है जुडिशरी से रिलेटेड भी SC ST OBC का, जो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, आप देखिए छत्तीसगढ़ में OBC ओवर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जितना उनका कोटा है उससे ज़्यादा है। ST 21% वैकेंसी है, SC कोटे से ज़्यादा है। पर उड़ीसा में आइए 89% वैकेंसी है SC लोअर जुडिशरी में, STs की 100% वैकेंसी है, OBCs की 52% वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल हैट्रिक मारी है, सेंचुरी। We doubt the data, but this is the data the government is giving. This is the data from official sources. But for West Bengal, all three quotas are 100% vacancy. And you can see for Jharkhand also, the vacancy is in 60s, and we all know the makeup of the society in Jharkhand. So it's very concerning. If we want to have a diverse justice system, we need to make more efforts. इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। जेलों में, अब आप अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उसके पहले जेलों की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन जेलों में लोगों की, जितने लोग घुस रहे हैं वो तो डबल होते जा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी स्लाइड दिखाई है, ये जो रेड वाले बॉक्स में जो हैं, ये 19 राज्य ऐसे हैं जहां के एवरेज जेलों की वैकेंसी 100 से 185 पर ऑक्यूपेंसी 100 से 185% तक है। तो क्या हम इसी कमरे में अगर 2 गुना लोगों को भर लेंगे तो हमें कैसा लगेगा? विद द AC ऑन एवरीथिंग, यू कैन ओनली इमेजिन हाउ इट इज टू बी शेयरिंग अ बैरक मेंट फॉर 20 people, but there are 100 people packed in it. And the next slide shows you this. From 2010, the inmate population has increased from 3.5 lakh to 5.5 lakh, whereas the capacity has trailed behind. 3.2 लाख से अब 4.25 लाख से प्रिजन की कैपेसिटी। ये लाइनें थोड़ा सा मिल रही थी 2015 के आसपास, उसके बाद ये एकदम से दूर होती जा रही हैं बिटवीन इनमेट पॉपुलेशन एंड कैपेसिटी। 12 राज्यों में एवरेज ऑक्यूपेंसी 150% से ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे जेल हैं जो ओवर क्राउडेड हैं। इस बारे में कोविड में काफ़ी ध्यान दिया गया, अब हम शायद फिर से रिलैप्स कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। और इन्हीं से जुड़ा हुआ जो विचाराधीन कैदी हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनका शेयर बढ़ रहा है, इट्स टच्ड 80%। एक और चीज़ इसमें जोड़ दूं, 2007 के बाद आज पहली बार लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 130% ऑक्यूपेंसी है। 2007 में 136% थी। So this problem of more arrests, not proper arrest, then not getting bail, then everything ends up in the prison system. And what happens there once you reach, जो उनका सुधार का काम है वो हो ही नहीं रहा है। 5% कैदियों को किसी तरह की एजुकेशन दी गई, अकॉर्डिंग टू प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। विलेजेस पर लीगल एड क्लिनिक, जैसे कि हेल्थ क्लिनिक, जैसे कि सरकारी स्कूल, जैसे कि ग्राम पंचायत का ऑफिस, उसी तरह विलेज लीगल सर्विसेज क्लिनिक का एक इमेजिनेशन है नालसा के एक्ट में। ये हर गांव के, कुछ गांव के समूह में इनको होना चाहिए। इनका नंबर एकदम से गिरा है 14,500 से 4,500। इससे क्या हुआ है कि हर राज्य में इन क्लिनिक्स के ऊपर दबाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये क्लिनिक्स एकदम से कम हो गया, अब एक ही क्लिनिक रह गई है, तो उनके रूरल एरियाज के लिए अब एक ही क्लिनिक है। इस पर भी, ये भी एक अंडर कवर्ड पॉइंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो न्यू, एकदम ही न्यू है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हम चाहते थे SHRC को स्टडी करें, उनकी भी कैपेसिटी स्टडी करें। तो हमने पहले वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे देखा कुछ भी नहीं है। फिर हमने फ़ोन करे, हमने चिट्ठियाँ लिखी, हमें जानकारी नहीं मिली। फिर हमने RTIs करी। ये RTI हमने 1-1.5 साल के अंदर जो रिस्पॉन्सेज मिले 25 RTI SHRCs के लिए, उनके बेसिस पे ये की पॉइंट्स हैं। रिपोर्ट के अंदर एक पूरा सेक्शन है ऑन SHRCs एंड देयर इज मोर डिटेल देयर। बट ऑन एवरेज हर SHRC में 50% पोस्ट खाली हैं। हर SHRC में जो उनका इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है, जो कि मानव अधिकारों के हनन के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो विंग होता है, उसकी मैक्सिमम संख्या 5 है, या 1 है, या 2 है, या 4 है, 5 है।
फीमेल्स को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे हैं ही नहीं वो। और जो पूरे SHRC हैं 25, उनका कुल बजट 100 करोड़ था, 100 करोड़ के आसपास। इनकी पेंडेंसी 33,000 है। NHRC की दिल्ली में जो बैठते हैं, NHRC का बजट लास्ट ईयर में 68 करोड़ था। तो मानव अधिकारों को प्रोटेक्शन इस हालात में तो नहीं कर सकते, और जो बजटरी एलोकेशन है उसको ऐसे ब्रेकअप करें आप। 37 पैसे पर पर्सन NHRC का बजट होगा पर कैपिटा स्पेंड, 80 पैसे होगा अगर हम उस 105 करोड़ को लें जो 25 राज्यों का है, और टॉफी भी 1 रुपए की आती है, और वो जो लूज चेंज में आपको वो जो टॉफी देते हैं वो भी आप 50 पैसे आप कोई देता ही नहीं। तो बहुत ही कम है इसकी तरफ अटेंशन। एक और चीज जिस पे विपुल जी भी बात कर सकते हैं, विच इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की टू चेक अब्यूज इनसाइड पुलिस स्टेशंस, and Supreme Court said put CCTVs with 18 months recording, audio, video, night vision in multiple places in a police station. Again, here also we did our RTI study, and we found that only very small remote Arunachal Pradesh with a few police stations is saying that all my cameras have 18 months capacity. Only 7 states, including only actually 2 large states of Madhya Pradesh and Karnataka, उन्होंने कहा कि मेरे सारे कैमराज में ऑडियो वीडियो है। तो कहने का कुल मिला के इसका मजमून ये है कि कंप्लायंस एकदम जीरो है। ये केस अभी इसी महीने आने वाला है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। इन द रिपोर्ट देयर इज मोर इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज ऑन व्हाट दे रिस्पॉन्डेड टू अस, सो वी कैन प्रोवाइड यू दैट। मेथडोलॉजी से मैं खत्म करता हूँ, टाइम भी हो गया है। मेथडोलॉजी के लिए जो भी सवाल होंगे, एक्चुअली हमारे डेटा पार्टनर हाउ इंडिया लिव्स हैं स्टेज पे, वो आपको आंसर कर सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे डेटा सरकारी है और हमारे मानक फेयर हैं और हमारे बेंचमार्क्स भी या तो पॉलिसी के अंदर हैं या प्रिजन मैनुअल में हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये सोर्सेज हैं हमारे, जैसे मैंने कहा ये हमारी स्कोरिंग गाइड्स हैं। तो रिजर्वेशन हो गया, प्रिजन मैनुअल हो गई, या पब्लिक इंटरेस्ट में हायर द बेटर या लोअर द बेटर, जो भी हो। कुछ हमारी रिकमेंडेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। सब तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन जैसे कि माया जी ने कहा भी है कई बार कि लीगल रिप्रेजेंटेशन एट पुलिस स्टेशंस एंड कोर्ट्स पहली जरूरत पे ही होना चाहिए। SHRCs को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, आधी आबादी हो या कोटास हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वैकेंसीज। विद दिस friends, I would end this presentation. Our partners deserve a huge round of thanks, I mean not applause but thanks, who have enabled this report that we have worked on for the last 18 months or so. And thank you again for all of you for coming here and listening patiently. Thank you so much. There is one thing that I would now quickly ask my colleague Lakhvinder, who is our data expert, to do, which is to just tell you in 5 minutes what is the new website about that the India Justice Report team, with the help of Faris, who's sitting here, who's made the website, and I would like to thank Faris and the Frappe team for helping us with that. Lakhvinder, can you please explain the... Thank you, Vale, and you can access India Justice Report website on this link, which is indiajusticereport.org. So this site still is work in progress and we will be improving it more, but it has most comprehensive data on justice capacity. So now I'll take you to the Explorer, Data Explorer, where you can get the data in few clicks. So you can click on View Latest Ranking. Yeah, this is the main data page of the website. It has three main tabs: ranking, states, and indicators. And these all three are interconnected.
So currently it shows the 18 large and mid states ranks, and clicking on the hover onto the maps shows you the states overall and pillar wise ranking. You can also use this drop down menu for small states rankings, and previous ranking for IGR 3, so IGR 2 and 1 you can also check on this drop down. Pillar wise ranking can be accessed on these tabs, and as well as said that all the indicators across pillars are based on 3 themes, so 6 themes, and out of those 6, 3 has been ranked, and you can access those here as well. Now moving to the second tab, which is state. You can click on any states, which will take you to state page, which shows you again IGR 3 overall and pillar ranks. Also pillar wise indicator data. Yeah, you can check this, which has all the theme wise data as well as the indicator values. Yeah, indicator values. Yeah, you can come to this page directly from the ranking page also. You can click on any state, it will directly take you to the state page. Yeah. Similarly, you can go to the indicator page as well by clicking on any pillar, and you can click on the indicators, for example, share of women in police. Yeah. This is the indicator page. Here, small tab I provides you the detail of indicators in terms of formula, benchmark, scoring guide, and data source that has been used for this indicator. Hover on the map again, it gives you a table format. It gives you a table format which has a matrix that has been used to calculate this indicator with the indicator value. So जैसे कि share of women in police को calculate करने के लिए we have used two metrics, total women in police and total police. So in Rajasthan in IGR 1, this value was 8,000 for women and total police was 90,000, which gives you a 9.3 value for share of women in Rajasthan, which in IGR 3 has increased to 10.4%. So this is kind of a time series data for a state in one view. Similarly, table view में भी आप ये data देख सकते हैं, where you can also use filters and drop down options to compare states. For example, you can select Andhra, or you can, if you want to compare it with, for example, with Chhattisgarh. Yeah. So it provides you bright value as well in this column, and the row values which has been used to calculate again this indicator. So here we can see in IGR 3, 7.1 was the share of women in Chhattisgarh, whereas 22% in Andhra Pradesh. So you might ask that can we compare this value with IGR 2 or IGR 1? Yes, there is an option. If you click on a drop down menu, you can select all IGRs. It has all the data that has been used for this particular indicator, and similarly you can choose states and compare their values over the period of time. Yes. Okay. So yeah. So you can also download this data in Excel format, which is available in this website as well. Yeah. Yeah. This is about the website. You can also share this website by clicking on this link. Yeah. Now over to Wale. Thank you. Thank you, Lakshmana. Thank you so much. Yeah, with that, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी इंसाइट लेना है आपको, तो आप हमारे पैनल से बात कर सकते हैं. Any comments, any thoughts? In that case, I would like to then take the opportunity to ask Gagan to give his opening remarks. Just a brief description or introduction about Gagan is that Gagan's organization, there's not one, there's many. Center for Social Justice is the one hat that he's wearing today, and he has vast experience in working with all kinds of people's issues. So over to you, Gagan.
you'll have to come here. शुक्रिया वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग आए. और द आइडिया रियली इसके पीछे है कि एक पब्लिक पॉलिसी जो एक्सेस टू जस्टिस की है, इसके ऊपर पब्लिक में चर्चा हो. और इसलिए आई थिंक वी आर हैविंग दिस विद यू ऑल, दैट हाउ डू यू टेक दिस पब्लिक डिस्कोर्स एट अ बिगर लेवल. मेरा स्पेस जो जहाँ मैंने 30-40 साल काम किया है इज इन द एरिया ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स लीगल एड सिस्टम. और बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि पैसा है और खर्चा नहीं जा रहा. एंड आई थिंक दैट टू मी इज द ट्रेजेडी. बाकी सब लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है. यहाँ नालसा 150 करोड़ रुपया देता है पर स्टेट्स उसे खर्च नहीं रहे. दूसरी तरफ कटिंग एज जो मैं बार बार कहता हूं, जो वले ने बात की लीगल एड क्लिनिक्स की, लीगल जो डीएलएसए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसका रोल उसके एक्ट के प्रमाण बहुत वाइड है. वो बहुत इंटरवेंशन कर सकता है अगर उसके पास जो पैरालीगल वॉलंटियर और जो डीएलएसए में एक्रेडिटेड लॉयर्स हों, और वो टीम्स अगर साथ में काम करें. और एक ही आपको एग्जांपल देता हूं कि जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो लगभग 26 से 30 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स सड़क पे आए थे. इन सबको मजदूरी नहीं मिली थी, इन सबको खाना नहीं मिला था. तब डीएलएसए का बहुत बड़ा अहम रोल था बाय देयर एक्ट. और जब हमने उनको पूछा कि आप कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये तो हमारा रोल नहीं है. तो therefore one is resources but the other is people understanding their role and their जो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें हम कितना खर्च रहे हैं. और फाइनली मैं इतना कहूँगा कि अगर हम 4 रुपया लीगल एड पर कैपिटा पे खरीदते हैं तो दैट्स नॉट इवन हाफ अ कप ऑफ टी. आज भी 10 रुपये में चाय मिलती है जैसे आपने कहा. therefore किसको कैसे पैसा खर्चना है ये पॉलिसी डिस्कोर्स हर स्टेट में. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल द स्टेट्स कि आप इसे लेके अलॉन्ग विद योर लॉ यूनिवर्सिटीज हर डिस्ट्रिक्ट को आप मैप कीजिए एंड यू विल फाइंड अगेन अ बिग गैप विद इन द स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो आई थिंक द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हैज टू ट्रिगर a movement right down to the district level जहां फिर बहुत पैसा पड़ा है अनयूटिलाइज, और इसे राइटली कैसे खर्च करना ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट गिव्स यू द रोड मैप. अगेन लास्टली वी आर टॉकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरिंग एंड ऑलवेज इट्स द अदर वे राउंड. क्वालिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम क्वालिटी की क्या बात करेंगे. बट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा doesn't mean quality. So I think we need to start looking at that equation much more. Thank you, Maya, and especially the IAR team. They've done an amazing job. Thank you so much. I think there are no more questions, but I would like to request then Ms. Maya Daruwala, the editor and convener of the collective, the force behind the report, the person because of whom everybody is here on the stage, to just end this gathering with her final remarks. Thank you. कोई भी सवाल नहीं है इस वक्त? हाँ जी. तो विलिंगनेस और एबिलिटी दो अलग चीजें हैं. अब विलिंगनेस नीचे से मैं आई शाउट Come here.
No, it's okay, Mike. No, you have to come here because they need it. Very quickly, I think it's a good question, and therefore, ये पैसा खर्चवाने के लिए क्या फैसिलिटेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या एनालिसिस होता है, प्रायोरिटीज क्या होती है, ये चर्चा होती नहीं. एंड आई वुड ओनली से पैसा खर्चवा सकते हैं जहाँ जहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ती है, वो पैसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा वगैरह वगैरह लेके सेंसिटाइज करके खर्चवा सकती है. बट अदरवाइज पैसा खर्चना यानी काम करना. That's it. इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि पैसा रिलीज कब होता है. कई बार ऐसे देखा जाता है कि पैसा जो है बहुत Come, I'm sorry, this is not working that way, but yeah. But anybody else? पैसा बहुत लेट रिलीज होता है. और नॉर्मली स्कीम्स की जब बात होती है तो पैसा एक बार सितंबर के आसपास रिलीज होता है और एक बार फरवरी या मार्च में रिलीज होता है. तो समय नहीं रहता है कि उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए. तो ये एक मेजर इशू है. आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, बट जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट में जो पैसा फाइनली रिलीज होता है फॉर द डिपार्टमेंट टू यूज, कई बार वो पैसा बहुत लेट रिलीज होता है. नहीं है. यस, यही प्रॉब्लम है. Standing committee is standing committee. है इसका कोई वे आउट है, कोई फाइंडिंग्स है आपके पास कि क्या इसका सॉल्यूशन है, कुछ वे आउट है, या इस लेवल पे कोई रैंकिंग की है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं That- कि किन्होंने ज़्यादा खर्च किया, अनस्पेंड मनी कहीं पर कम है, इस तरह का भी कोई एनालिसिस है? जी है. भले कि जी हाँ. अवेयरनेस जो हेल्प हो सके. एक चीज़ पंकज जी, इसमें हम आपको यूटिलाइजेशन डेटा तो दे देंगे. सारे डिपार्टमेंट्स में 90% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है. वो पैसा सैलरी पेंशन में चला जाता है जो फिक्स्ड खर्चे हैं. अब दूसरी प्रॉब्लम है कि यूटिलाइजेशन तो कर दिया, पर क्या वो सही जगह करा? उसके लिए जो हमें असेस करना है वो डेटा अभी नेशनल स्तर पे नहीं है अवेलेबल. हम लोग आपसे एक दो स्टेट्स की स्टडीज शेयर कर सकते हैं, पर मैं नेशनल लेवल पे नहीं अभी बताने की पोजीशन में. कुछ चीज़ों का डेटा अगर आप चाहें तो जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग बजट है पुलिस का जो जैसे कि कई जगहों पे तो बजट एक चीज़ का है, कई जगहों पे उसको तोड़ना कई छोटे छोटे मदों में आवश्यक है. जैसे मान लीजिए कि पुलिस का ट्रेनिंग का जो बजट है, तो ये बात सही है कि पुलिस के पास कैपेसिटी नहीं है. अब इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, कई जगहों पे साइबर क्राइम हुआ और उनको तफ्तीश करके कुछ प्रमाण लेके आने वहाँ से एविडेंस, तो वो मॉनिटर उठा लाए और वो मदरबोर्ड छोड़ के आ गए. कुछ कैपेसिटी नहीं है, पता ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है. तो बार बार उनकी अगर ट्रेनिंग हो तो कितना पैसा खर्च हुआ है ये आपको इसमें मिल जाएगा. एक जगह पे है कि तेलंगाना ने 28,000 रुपये प्रति पुलिस पर्सनल, ज़्यादातर कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स पे खर्च किया है, और वेस्ट बंगाल ने 305 रुपये खर्च किया है, चंडीगढ़ ने 370 रुपये खर्च किया है, और एक स्टेट ने शायद मेरे ख्याल अरुणाचल प्रदेश है, उसने 43,000 खर्च किया है. तो इतना बड़ा गैप क्यों? और कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने जीरो खर्च किया है. तो आप ट्रेनिंग को मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ट्रेनिंग कोई खाली खर्चा करने वाली बात है या कुछ हुए. तो उसको अगर इसके लिए, और जैसा गगन ने भी पहले कहा और इसमें रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा कि ये जो कन्वर्सेशन स्टार्टर जो है कि मतलब बातचीत हो, डायलॉग हो और डिस्कोर्स का लेवल ऐसा हो कि थोड़ा सा प्रेशर बने उनके ऊपर कि सर आपके ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ना, क्यों नहीं आप वो करते, इसको आप सुधार सकते हैं, आपके पास इसके लिए संसाधन भी हैं, आप क्यों नहीं कर रहे. मैं सिर्फ ये एक जुडिशरी का उदाहरण देता हूँ. ये 7,000 करोड़ अभी ई कोर्ट्स फेज 3 के लिए एलोकेट किया गया है. इट्स अ ग्रेट अनाउंसमेंट, 7,000 करोड़ फॉर ई कोर्ट्स. बट लेट्स लुक एट हाउ दिस मनी विल बी स्पेंट. Who is the person in charge? First, there is a E-committee of the Supreme Court that's headed by the Chief Justice of India. He has 1,000 other priorities. This is a lowdown on his list of priorities. Then every High Court has a computer committee. That computer committee is also headed by senior judges of the court. This is not amongst their priority.
then every High Court has also set up an officer who is responsible for this. बट वो ऑफिसर है कौन? अगर आप देखें तो वो ऑफिसर है कोई डिस्ट्रिक्ट जज कार्डर का ऑफिसर, बेसिकली वो जज है. तो ही इज अ जज हु इज नाउ ऑन डेपुटेशन इन द हाई कोर्ट एंड इज रनिंग दिस कमेटी. अब उसके पास है, चलिए मानते हैं 7,000 करोड़ इक्वली डिवाइड हो गया, तो हर स्टेट में होगा कुछ, सोच लीजिए कि अबाउट 200 करोड़ के आसपास अगर मिले बजट. तो ये कैसे खर्चेगा? इसको तो पता ही नहीं है. इज अ डिस्ट्रिक्ट जज, इनको पता नहीं है कि शुड आई गेट दिस सिस्टम और दैट सिस्टम, विच काइंड ऑफ वेंडर शुड आई कॉल. एंड एज गगन सेड राइटली कि पैसे खर्च करना मतलब काम करना. सो इट्स इजियर फॉर दिस पर्सन कि 1-2 साल डेप्यूटेशन कर ले, फिर मैं वापस चला जाऊंगा, फिर कोई विजिलेंस का भी केस नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई मैं खर्च कर भी दिया तो कोई विजिलेंस का केस डाल देगा मेरे ऊपर. तो इसलिए पैसे खर्च नहीं होते, बिकॉज वन, यू डू नॉट हैव कॉम्पिटेंट पीपल. एंड दिस इज नॉट अ personal affront to anybody, but generally speaking, particularly for the judiciary administration, you do not have people who are equipped. It is really unfair for the judiciary to expect that district judge cadre officers will now come and run e-committees. One, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात किए, तो हमारा जुडिशरी तो पूरा इंग्लैंड के जुडिशरी के ऊपर ही मॉडल्ड है. हम तो कॉलोनियल टाइम से तो कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं कर पाए. वैसे करना चाहिए था, वो दूसरी बात है. पर आप अगर इंग्लैंड को ही देखें, क्योंकि इतना हमारा रोल मॉडल है, उनके सुप्रीम कोर्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था पहले तो वो चेंज ही हो गया इंस्टीट्यूशन, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को तो बंद ही कर दिया, उसको तो यूके सुप्रीम कोर्ट कर दिया. और दूसरा, अब तो ये जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये ई कमेटी, ये कंप्यूटर डिजिटाइजेशन, ये जजेस नहीं करते. दे हैव अपॉइंटेड अ सीईओ, a professional CEO who is and judicial administration of professionals, because at the end of the day, if justice is a service, as the Chief Justice of India has said, and he's very right in saying that, then we have to provide that service professionally. So administration, that is e-courts, e-committee, digitization, ye 7,000 crore, this should be spent by people who know what they are doing. And so that is what the purpose of the India Justice Report is, that let's go behind the announcement. Let us see what the capacity is to be able to deliver, because otherwise we are only going to get caught up in issues of judicial appointment, collegium, this, that. These are all political issues, but at the end of the day, it's the capacity to deliver justice for the common Indian that is relevant, and that capacity ultimately is determined by, is that person sitting there a district judge who is spending the money, or is that person somebody who is competent कि यहाँ पे पैसे खर्च किया जाए for efficient digitization. I think that's the overall picture. Ma'am, I have a question. Yes. Here this side. ये आपका एक इंडिकेटर है डाइवर्सिटी का, जिसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया आपने SC, ST, OBC को लेकर. इसमें माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई स्टडी है? क्योंकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो क्या कवर्ड है इसमें? इसमें नहीं कवर्ड है, बिकॉज आंकड़े नहीं हैं. Until 2013 पुलिस में तो आंकड़े आते थे of how many minority people there are, what is the religion, the religious breakdown. But since then we have not seen it. So that is a gap. So in our report also you will not find that. But the very fact that you are asking that question points to a problem. Why is it not there? Why shouldn't it be there? आखिर अलग-अलग diversities होती हैं ना, और minorities is large groups of people. It's not only Muslims, but there are all sorts of minorities, Christians and linguistic minorities and so on and so forth. But one other minority is coming into view, which is disabilities. उनके आंकड़े अभी कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े इतने अनरिलायबल है एट द मोमेंट हम लोग ने इंक्लूड नहीं किए हैं, केवल इतना बताने के लिए कि इट इज अनरिलायबल. Hi, I have a question. Yeah. So we frequently hear about, sorry about my voice. We frequently hear about prisons being overpacked and prisons being bursting beyond capacity, and it is there's packed with under trials. And Justice Lokur did say that open prisons is one way to go for to solve this problem. But are there more solutions? Are there answers to this unending problem that is only increasing?
Leah, do you want to answer that or? Yeah, please. Well, I'm officiating. open prisons is largely a structure which is for convicted prisoners. It's only after you complete a certain part of your sentence that you are sent to an open prison. And if you look at the prison convicted population, it is less than 25%. 75% and 77% in fact are under trials. So open prisons is not going to solve the issue of under trials. Now, when you look at the issue of under trials, the central solution, in my opinion, lies in the issue of access to legal aid and bail. And there we are finding increasingly that judges at the lower level, the lower judiciary, are becoming more and more conservative when it comes to grant of bail. They're asking for all kinds of conditions, documents, ID proof, residence proof documents, and this is making it very difficult for people to go out on bail. So unless and until we find more liberal ways of grant of bail, the old judgment of Justice Krishnaiyer that bail and not jail should be the right, it's become almost the reverse now. So this is one of the main reasons why the population is increasing. And one more particular reason in these 2 years has been COVID. Due to COVID, the population has really shot up. From a couple of years back, it was around 70% under trials. It's become 77%. And that is largely because no trials were held in the last 2 years. Only urgent bail matters were heard. So these are some of the, we'll really have to relook the whole issue of bail and not look at it only as a financial system of, only trusting those people who have resources to, that they are not going to. One recent judgment of the Supreme Court in terms of people who were released on bail due to COVID, now the court has said all of them have to surrender. Now that's going to again increase the prison population. Leah? Just 2 points on the issue of bail. One is that, we don't really have a legislation that covers bail. We don't have a bail bill. So there is a lot of discretion within the CRPC on how bail is granted, what conditions can be imposed, etc. So that gives magistrates a lot of discretion, and I think that's what we are seeing playing out. Like Mr. Vijayaraghavan said, there's so much discretion, so there are onerous conditions, and so a lot of bail cases are now going to the High Courts and Supreme Courts. Recently, I heard that in Patna, 8 judges, Patna High Court, 8 judges are deciding bail cases. 150,000 bail cases in the Patna High Court in a year. So, it's so that the problem starts at the magistrate level, and then it cascades to the High Court and Supreme Court. The second thing is that when we look at the issue of under trial detention, it's not just a police problem or a judiciary problem. There are, and every pillar of the justice system is involved, and we need better information communication systems between these pillars. So the police, the judiciary, and the prisons really need to be able to communicate electronically, even if not in real time, but at least faster than paper-based processes. So at least if the magistrate imposes an onerous condition that the under trial cannot fulfill, then that information needs to come back to the magistrate very fast. Okay, 2 weeks have gone by, he's not able to get a surety. Or the prison needs to be informed immediately that this person has got bail. So there is a system called ICJS, but the implementation of that is very poor. So we need much better information systems between these various pillars. Maya, can I just say one story which very poignant, which was personal. One of the state government had asked me to do a study of all the jails. I thought they were asking you to get to jail. And I went around some of the smaller sub-jails, and I actually found that the jail staff was in the jail and the prisoners were out in the compound. This was a scene which I have seen, and I said, but what? And then one of the jail staff said, Karan bhai, we are Umar Kaid here. These people are coming and going. And that's when I wrote to this thing, the condition of the jail staff. And I think that's what needs much. They have to write 5 times to issue a postcard. 5 different places they have to sign up to issue one postcard to the thing. I wouldn't do it.
sorry, you've asked a question that everybody has something to say on. I also want to draw your attention to the under-trial review committees. The under-trial review committees have been created by the Supreme Court. They were supposed to meet periodically. During the COVID, they were supposed to meet every week. Despite that, only a few people, 30% or so, it's all in the report, got out. Then, when everybody started to make a row about it a little later on, the legal aid system, the legal aid actually created a sort of campaign, a mission to do this. And they got everybody at the DLSA level to hold, because they're the conveners, the DLSAs are the conveners. So the under-trial review committee started to work for a little bit regularly, and they got out a whole bunch of people. So there's no accountability for not complying with what your duty is. Then there's the whole system of boards of visitors. Boards of visitors, my colleague from CHRI is not here, but they've done a whole big study on boards of visitors, what they are, what they're supposed to do, and why are they not active in every jail. Every jail is supposed to have a board of visitors. This board of visitors is supposed to assist the jail authorities not to write the 5 postcards. They're supposed to make it much more easy for the jail authorities to do what they can. And of course, the baseline question about prison and the prison system is, why don't we have a cadre, state-based cadre, of prison administrators? Just like you were saying about court administrators. Court administrators are a professional body of people. So why not prison administrators who come up from the ranks up, rather than they get stuck somewhere at the state level and then it's a bunch of policemen. In any case, we are short of policemen. So why are they doing jail work? Ma'am, I have 2 questions. As your report said that there are only 5% of inmates who get some kind of education. What is the reason behind that? The same reason that is throughout this report. The capacity is not there. There are too few people. There are problems about who do you train? Do you train the convicts? Do you make the convicts into teachers? What kind of teaching do you give? Do you give computers or do you give ordinary literacy? All of these things depend on the population of the jail, the locality, how many people there are, and the willingness and the belief that you can bring in people from outside to be there and to help you run that jail or to help you run a program. But if the heads of the prison department are all security bound, and you also know that should the smallest incident take place, because there are not enough cadre staff to guard, etc. And of course, there are not enough correctional staff. So everywhere, it's a cascading effect, which eventually does benefit or negative who? It is the citizen. If you go to jail, khuda na kare, but if I go to jail, I am not going to, of course, from the way that we have seen people going to jail, I think I'll get a little better treatment, but that's a different story completely. 9/10 of the population of jails is of the depressed socio-economic classes. आपने minorities के बारे में पूछा, over representation कितनी है? वो देखिएगा ना. Now, tribal people, STSCs, migrant labor, ये सब लोग क्या सीखेंगे? क्या सिखाएंगे आप? कभी सोचा है, कभी सर्वे किया है, कभी उनको पूछा है? अच्छा, ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, हमारे भाई साहब हैं बाहर लोकेलिटी में, उसको करा देते हैं. That's not how it's supposed to be. Some jails, Telangana has particularly been spoken of in this way, Kerala, have been able to do something because there has been thought behind it. And it's not an ad hoc thing, आपने Supreme Court से add on किया या model police rules में add on किया और फिर उनको कह दिया कि भाई करो.
You can't do it like that. Ma'am, second question is the state of Uttar Pradesh at the lowest rank at 18. What do you think? What are the reasons behind that? Why it is so? It's all in the report, and actually it's in the state fact sheet. But basically it's the huge, large population. And how do you cater for all the justice needs in that population? Especially when they have been, it's a legacy thing also. It's been building up for years. It didn't happen yesterday. That's not to give them an out. If you want to govern, I always say this, if you want to rule, if you want to govern, whether it's Kerala, whether it's Uttar Pradesh, you've joined the service or you've been elected, don't complain about the population. Population was there before you. All right. So thank you very much for being here. Please do read the report. We are all of us, available for you anytime to give you any kind of information that you want. One thing I do want to say about the report. We've been publishing this report now over 4.5 years, and this is the third report. The report is not a critique or a criticism of the government or of the rulers or of the justice system or of the people in it. It is showing you a mirror. क्योंकि आंकड़े उनके हैं, ना तो हमने कोई what do you say analysis की है. बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग analysis क्यों नहीं करते. ये दूसरे लोग के लिए है. Lekin it shows you a direction. If the mirror is distorted and it is not true from the ground realities or the statistics that you find in the districts or in the states, it is because the data at the national level has been distorted. So the mirror will show you only the picture that the data gives you. And the data we take from, in all cases, from the national collections of data. I think, save and except, we have taken data from the districts in relation to the spend, the money spent on the judiciary. Thank you. Yeah, oh, I should announce the good part. The good part is that there's lunch for everybody. Please do join us for lunch. Please do ask anything you want. Thank you.